कर रहे हैं? Sir, I'm pursuing engineering from Bhagwan Parshuram Institute of Technology, which is affiliated to IP University Delhi. Okay. In a bizarre condition, in a bizarre situation, if some enlightenment force comes to you and say, I mean, you name it a god or anything, and say to you that you're going to join Spjain, Okay. but nowhere in your life you can neither write nor tell anyone that you are a product of Spjain, neither to your husband, neither to your kids, neither to your LinkedIn, neither to Facebook. Do you still want to join Spjain? Yes, sir, definitely. Sure, take 30 seconds time. This is, I mean, you cannot answer this question immediately because that's beyond human capabilities. Can I आप take थोड़ा a second? सोचिए. My Yes, sure. battery is about to die. आप ले सकते. It will be great if I can get her resume as well, but then if it is fine, if it is not. I've shared it on the group. I've sent. ठीक है प्रियंका बोलिए. Sir, I think I'll still go with it. I'll definitely go with it because the learning that is provided by the highly skilled faculty and the experience I get to share with them and get to know their first-hand experience, that is above anything that is written in my resume. And due to like this era is all about skills, like even a person without a degree or without even a +2, which has more skills, is more valuable than a person who is non-skilled, is from a highly prestigious institute. That's my take on it. Your resume is so beautiful, प्रियंका. मैंने बहुत दिन बाद बहुत अच्छा resume देखा. Thank you, sir. That means किसने a lot. बनाया ये? Sir, this is actually our college has hired CalixPod, and we were supposed to put all our input, like whatever we've done till yet, and Yes. they constructed it like it's auto-generated. Which tool it is, because our other students can also be benefited, because these are. Sir, CalixPod. Can you spell it out? CALYXPOD. CLY. POD. CALYXPOD. POD. CalixPod. Yes, sir. It's in my name of the PDF is Mriganga Sharma CalixPod. Great. Sir, there's a better one, Novo Resume. That is a much better one. NOVORESUME. Okay. Tell me about your background. Sir, I was born in a small town, Bikaner. It's in Rajasthan. Then in 2006, we moved to Delhi. And since then, we've been here. I did my education from Delhi too, even my graduation. And that's it, I guess. How is Indian politics going to shape the current industry you are going to be in? There is any interlinkage or justification to this? Yes, go ahead. Yes, sir. Like currently, like even the future, it's all about IT and CS. Because of Corona, everything has become online, and like our PM Modi, he's all about making India digitalized. So the future is definitely based on everything online, as the pandemic seems like endless. Even like the specialization Who brought computers to India? Sir, I can't recall as of now. Okay. Okay, Mriyanka. Thank you so much. What I have drawn is that, again, a little slightly higher side on the grammar. Okay, sir. Sir, I'll come back to you.
मैं बताऊंगा और इसके बारे में, ठीक है? I'll come back to you. ठीक है, यश? Hi, sir. Yash, quickly, Hi. quickly introduce yourself, Yash. Okay, sir. So, I am from Delhi. I am born and bottom in Delhi, sir. And I belong Which part to of Delhi? it's in North Delhi, near to Okay. Hansraj College. Okay. Yeah. So I belong to a family business background, and basically I live in a joint family, and I have done my schooling from Presidium Ashok Vihar. It's near to my house, and I'm into my family business from last 4 years, and What that's kind it. of family business you have? It's in private limited, sir. We are into an FMCG brand. It's in Neha Herbals Private Limited. आपका रोल क्या है उसमें? Basically, sir, I started my journey at Neha Herbals in 2018. And there, when I joined, I started as a business development and the sales training. And there, in the starting, in my role was to see our basically the sales team, how sales team is functioning, how sales team are doing the job, and plus what are the gaps are there into the market. So what I used to do is I used to visit like different areas. Like I used to visit Punjab, Haryana, and there I used to work with the team and like do retailing. So there I need to analyze what are the gaps into the market, what type of work my team is doing as per the organization's rules. So that exactly at the beginning I was supposed to do. And after that, I started doing e-commerce for the brand. I started focusing on the Amazon and I Flipkart. mean, the way you talking, हाँ यश, आप जो Yeah. बोल रहे हैं और आपका जो SOP LOR लिखा हुआ है वो ऐसा लग रहा है किसी बहुत टिपिकल एक्सपर्ट ने लिखा है. आपने कोई सर्विसेज ली थी क्या किसी As और in? कंपनी से? As in? ये जो आपका SPJMR का फॉर्म भरा है, ये तो कहीं SPJMR. मैच नहीं हो रहा है जो आप बोल रहे हैं. Which college you are for? Sorry? Which college you are for? Sanjam? Like I've done my graduation, you're asking? नहीं. संजम? Yes, sir. ये यश किस कॉलेज के लिए है? I'll have to check in the records. Just यश, आपका कौन सा कॉलेज प्रोसेस Sir, हुआ है? actually, I have applied in many colleges like BIMTech, IMT Ghaziabad, and Great Lakes. Like I've applied to many colleges, not a ठीक है. specific one. ठीक है. So if asked, have you taken any support from outside the dynamics? Did you? Like in the If SPJ is asking this question. Sorry, sir. अगर कोई यूनिवर्सिटी तुमसे क्वेश्चन पूछे तो what would be your reply? Can you just repeat the question once again? What is your GMAT score? It's 690. 690. Good. Okay, tell me about GMAT. I mean, what do you know about GMAT? When it was founded, which was the country it eventually founded, why it is in India, why not CAT, why has it been accepted by other countries? Yes. So basically, I don't know the complete background of the GMAT. Okay, I basically know that GMAT is applicable more of outside India, and some like some colleges in India take GMAT, and more if I talk about IIMs take only like for the executive programs for GMAT. Okay, and the reason I didn't apply for the CAT is like one of my cousins have given GMAT. So he basically explained me a little about GMAT that you can go for it. It's a home exam. You can do it online. So he just taught me something about GMAT, and then I go for it. Like I've given first attempt, and then I scored around 550 something, and then I give my second attempt. Then I scored around 690. So my main focus, if I tell you, was Okay, what is not your first attempt score? पहला first it attempt का was score around क्या था? 550, sir. 550. Second attempt? 690. Very good.
High school accomplishment. Talk about your accomplishments. You're talking about the graduation schooling. Yes, yes. I've done my schooling from Presidium Ashok Vihar, and after that, I have done my graduation from School of Open Learning, University of Delhi. क्यों भाई I've आप done, SOL से क्यों किए हैं? certain reason. Actually, the main reason was as I told you, I was into my family business, and I wanted to divert my time there, so I didn't go for a regular college. I I mean रेगुलर pursued कॉलेज सिर्फ पढ़ाई थोड़ी कराता है, आपका तो बहुत सारे स्किल्स आपके मिस होंगे. absolutely, sir. I totally agree with your point. Actually, my जो main प्राइमरी स्किल ऑफ MBA है, right. अचानक से 1 साल में या 2 साल में ऐसा आपके साथ क्या हो जाएगा कि आपको 25 लाख का पैकेज मिल जाएगा? इसके Sir, पीछे I'm आपका not क्या राय looking है? for a package. I'm not looking for a package. My main You are vision is not. not a package. नहीं नहीं, आपका पैकेज का विजन नहीं है, दैट आई क्लियरली Right. अंडरस्टैंड. बट बी स्कूल्स तो उसी तरीके से सोचेंगे ना कि मतलब आप उस पैकेज की वैल्यू को होस्ट करने लगते हैं. ये सही है कहना? तो आपके बिल्कुल. साथ ऐसा क्या होने लगता है? आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं क्या? ऐसा लगता है क्या आपको? मतलब basically your question is to my main reason to go for a post graduation program MBA. I mean, you want to go to MBA, but then you do Right. not clearly meet the requirement of being in present in the class. Might be on paper आप चले जाएं, but आपके narrations, आपकी diversity जो है, उसको कैसे conduct में लेना है वो तो आपको पता ही नहीं है. आप तो regular schooling करे ही नहीं है. अब I mean definitely as somebody College, who's schooling, doing college. So schooling regular college करे, college. college. Yeah. अरे हाँ, somebody अगर कोई home schooled है और कोई स्कूल गया है और वो कॉलेज में दोनों मिल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट होगा. यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो क्या Definitely. ऐसा, हाँ, तो क्या क्या डिफरेंस होगा? Basically, so difference ये होगा like exactly what I want. My main focus is going to increase my circle. Like basically the main आप focus नेटवर्किंग when you करने जा रहे हो. networking is my main reason. Absolutely. अरे तो नेटवर्किंग करने के लिए तो इतने सारे साइट्स हैं जिसमें आप उनके कोहर्ट में जाकर उनके साथ ब्रिंग योर ओन बियर करके एक साइट आया है, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं. व्हाई यू हैव टू वेस्ट 2 years ऑफ योर्स, 2 precious years? दुनिया के सारे It's अमीर आदमी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं. जब absolutely, आपकी sir. I अच्छी agree to it. अच्छी चीजें आपकी चल रही हैं तो व्हाई यू वांट टू इंडल्ज इनटू दैट? Basically, I और अगर feel I maybe. नेटवर्किंग करना ही है तो आप फॉरेन जाओ. So actually, that's I want to go foreign, but due to some family reasons, my father he's not agreeing to the foreign that I should go to foreign. So I cannot argue with him, and I cannot go I mean, against with him. I'm pretty shocked that there's somebody who wants to be in the managerial line in the executive committee of the board groups of the companies. वो अपने father को ही convince नहीं कर पा रहा है. That is Sir, it's something not about cannot be that. digestible. It's about the time. There's obviously, sir, every person not same. And at that age, if I tell you like 50 above year old people, they are so rigid about their decisions. I tell you, and when they have decided one thing, now it's not easy. It's not about convincing, sir. It's about rigidness. If you're rigid in some aspect, now you cannot convince them. If you're right as well, you because at that they're and at they're at that age, if they So say you something, mean to say you're they do. giving you mean to say you're giving it up on this, I'm not saying that I'm giving to up on this, or but you're yes, postponing? You're postponing. you can say आप आगे postponing बढ़ा as रहे हो well. उसको. You can say postponing, but I want बिमटेक to में utilize my IMT में time. जो जॉब करोगे, बिमटेक Sorry. में और IMT में जो जॉब करोगे, बिमटेक के IMT से जो निकल के जो जॉब करोगे, टाटा बिरला रिलायंस तो रिक्रूट करने से रहा, उसके पैकेज में तो काम नहीं करोगे तुम. यू डेफिनेटली वांट समथिंग अबव 20. सो फिर भी गोरो की कंपनी में काम करोगे और The इवेंचुअली अपने मैनेजर और point अपने लीड अभी ये भी श्योर नहीं है सर. सॉरी टू कट यू बिटवीन. सॉरी सर, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं किसी पैकेज में किसी जो कंपनी में जॉब करूंगा. इट्स नॉट श्योर अभी. अभी आई जस्ट देन वांट टू जब माय तुमने मेन कोई फोकस. मल्टीनेशनल कंपनी देखा ही नहीं तो अपनी कंपनी में उसको कैसे इन कैप्चर करोगे? एब्सोल्युटली, मैं तभी कह रहा हूँ सर. अभी अभी मेरे को श्योर नहीं कि मुझे करना है वहां पे किसी कंपनी में. बट हाँ, मैंने सोच रखा एट है कि लाइक प्रेजेंट आफ्टर द. सॉरी. at present tell 3 things which you are sure, 3 things I am which you are sure about. sure about. Okay. I want to do my own business. It can be my business, my own startup, and it can be my own family business. One of the whatever. That totally depends. Second thing,
I want to like in the terms of this career you're talking about, only in terms of my personal life as well. कुछ भी 3 चीजें. That I want to be with my family. I don't want to like go out of India and just be settled there. I want to be in India only. That's I'm sure about. I want to be with my family, and I want to create something new, like through my business or to my startup. As I mentioned, my first thing, it is interrelated. I want to create something new, which no one Okay, has created. let's slow down the tempo. Quickly answer a few one-to-one questions. Like, अपने life में you which personality you have met, like सबसे ऊपर वाली personality, the uppermost, कोई celebrity, कोई actor, कोई from the spiritual side, from the business side, one, the highest. The highest personality I've met till now. As a It seems that you're not so keen of no, thinking no, about I personalities because am. you're I know thinking too there are many much. people. You're so asking about one. Now that's I'm sure. And if you हाँ तो want to 3 ask बता me, दो. okay, it's one of my uncle, like my father's brother. He's the director of the company. No. Tell personalities at a global or national level which we also know. Okay, those That type kind of personality you're personalities. Yes. talking- Okay, those type of personality you're talking about. Okay, there's Elon Musk. That I Did listen you to him. have you met him? No, I've never. I listened to I'm him. So asking met that you? No, आप मिले. I've never met a Yes. personality like that. So sorry, I've never met a personality like that. Sorry, I forgot your question. The exact question you asked. Really sorry about that. So आप ऐसे किसी से नहीं मिले हैं जिनको मैं या और लोग जानते हैं? नहीं, मतलब ऐसे में किसी पर्सनालिटी से नहीं मिला से जिससे आप भी डेफिनेटली आप उनको जानते हो. I'm really sorry, I mean. अच्छा चलो, भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति मोदी जी. Very good. You're Very talking good. Rashtrapati sorry, it's president or PM. I'm I little think bit it's bad chief at. minister. Oh, Bharat. You are asking? No, sir. Bharat ka chief minister. Sorry. Yes. Who is the भारत भारत का chief का minister? किसका सर? भारत का भारत इंडिया का का chief minister. PM. भारत का chief minister. I don't know, sir. PM. I know. Okay. Who is भारत का governor? I'm not able to recall it right now. भारत में वॉल्केनो कहाँ पर है? I don't know, seriously. I'm a little bad at GK. Okay. Do you ride? You ride motorcycles? I ride car. No motorcycles. Car. Okay, car. Okay. Fiat is from which country? I'm not sure. German? I'm sorry. Renault Duster. Renault is from which country? I don't know. Okay. Okay. Suzuki is from which country? Suzuki. I don't know. From Okay. India. Apart from the corporate and the studies and everything. Last question. Lamborghini is for which country? Lamborghini is from USA. It was a guess. Seriously. Okay. So ऐसा कोई टॉपिक बताओ जिसमें तुम नॉन स्टॉप 2 मिनट बोल सकते हो. I can talk about social media. Social Yeah. media. I mean, I have certain questions like how is Snapchat? There is somebody's background voice is coming. I think it's yours, Yash. 1 second. Yeah, sir. How is Snapchat different from Instagram? Basically, on Snapchat, you can different. Basically, on Instagram, you can reach to many people organically. You can reach to different type of audience. You can on Instagram, you can create different type of content of your own, which people can see. But on Snapchat, there is no that platform where you can create your own content and you can share it with people, and many you can reach to like a wider audience.
So if I talk about as in a brand point of view, an individual as a point of view, if you want to get reach, if you want to expand your platform, if you want to people to know you more, you need to be more focused on Instagram as compared to Snapchat. Okay, so you clearly mentioned कि Snapchat के पास बहुत ज़्यादा advertising और बहुत ज़्यादा ऐसे scopes और ऐसे dynamics नहीं है, right? Not that much as compared to Instagram. Then how does Snapchat कैसे कमाता है फिर पैसे? And Snapchat sir advertising से कमाता है पैसे. Like if you watch stories on Snapchat, there are advertisement coming. So it totally Okay. obviously targets to your taste and preferences. For example, I'm a boy, so I'm at the age of 22. So basically, Snapchat going to show me ad for trimmers, right? Trimmers, or it can show me ad related to saloons or my like gymming, whatever. So it totally targets you and show advertisements on your stories. So Snapchat earns from that. What is your experience, Yash? Work experience कितने साल का है? More 3 to 4 years. 3 to 4 years. Okay. Sanjam, connect him to on the private line once this is done. So guys, I'll sum it up. Yeah, Pooja, Isar, Briganka and Yash, कुछ common value points आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? Yeah. You all need to work on your USPs. What one thing which you have and you can bring in the pace. Use keywords, don't use grammar. That was the reason why I couldn't have spoken much to some of the candidates, because they were using too much of grammar and I was getting bored. The same goes with everybody, because you are not the only one for the day and neither you are a celebrity कि मेरे को बहुत ही patiently आपको सुनना है. My focus would be just 5%, assume to presume this only. And still you have to make, I mean, if you cannot attract my attention, how can you be convincingly so good that you can attract the audience? An audience, definitely you will have an audience, whether it is for 2-3 log ya 10-20,000, because you are going to manage. And what is the true meaning of management is getting things done by others. For getting things done by others, you have to be vocal. First 3 lines are very important. You all like, but then आप लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें हैं. Pooja is sir, ठीक है? I mean, girls have always a upper hand when it comes to MBA and when it comes to B school because of the diversity that college itself has to meet. But with you, brother Yash, you have a very strong point here that you come from a family business and you qualified onto that league as well. Talk about more about your startup. Your GK was totally a nonsense thing, which I have seen today. बहुत ज्यादा काम करना है. कोई चीफ मिनिस्टर देश का नहीं होता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं. अब मैं उसके बारे में अकेले 1-to-1 में बात करूंगा. The most diffused profile I have rectified in person, I'll be telling to you. मैनिफेस्टो नहीं आप लोगों का, मैनिफेस्टो. और जवाब जो देना है वो बहुत लंबा नहीं देना है. अगर आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके जवाब में there is a element of suspicion. There is a element of suspicion. जैसे घर में हमसे कोई पूछा कि उस रूम में क्या कर रहे थे. Suppose my mother asked me and I start doing it. मैं उस रूम में गया था, then I was doing this and then eventually मैं था, फिर मैंने ट्यूबलाइट देखा, फिर मैंने घड़ी का दर देखा, फिर देखा. I'm giving too much of information. Because too much information, why we do it, because we think our mind works like कि हमें उसको hide करने के लिए बहुत सारे facts से दबा देना है. That's how our mind works. But ये 99.9% chance reverse हो जाता है, unless and until सामने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ ना हो. So जो जवाब में आपको फेक करना भी है या आपको कुछ वो बोलना है, उसमें आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं, बहुत ही क्रिस्प एप्लीकेशन रिप्लाई. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपसे ये कोई पूछे कि आई मीन anything which is very sudden and you don't know it. So the primary focus and intent should be you will not be wasting much of his or her time. आपको एक स्माइलिंग फेस हमेशा बना के रखना है. रिस्पेक्ट बहुत मेंटेन कर रखना है, क्योंकि गोरा कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है आपका.
आपका इंडियन ही लेगा। और इंडियंस का ईगो, थोड़े जो पढ़ लेते हैं उनका ईगो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, उस ईगो के चपेट में मत आ जाना, ठीक है। दे ऑल आर प्रोफेसर्स, वो लोग जो जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो उनको वो सिर्फ पढ़ाई इसीलिए की कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए थी, या जो भी चाहिए था, एक प्राइमरी रीजन ये भी होता है। एंड they think that the element of talent is on the minor side than discipline या इस तरीके से चीजें। तो that is again a point to be taken care। आप कुछ भी करिए इंटरव्यू के बाद, उसको 10 गालियां दीजिए, 20 गालियां दीजिए, लेकिन उस टाइम पर यू हैव टू बी लाइक रामा, एकदम शांत, स्माइलिंग फेस, वन वर्ड। There are times when you do not qualify on the decline of your merits. You qualify because they think that you can be the next Parvez Musharraf if this is the recruitment of Pakistan Army. It's a deep line. समझ में आया किसी को? परवेज मुशर्रफ अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी परवेज मुशर्रफ को रिक्रूट नहीं करेगी अगर टाइम को पीछे जाया जाए। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो क्वालिफिकेशन उसकी अच्छी नहीं थी, वो ओवर क्वालिफाइड था। ओवर क्वालिफाइड कभी कभार आपके एमबी का एक डायनेमिक्स है। एट द फार एंड ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड, इंटरव्यू में टाइम पे लिख लेना, डिप्लोमेसी। वो फैक्ट्स मत बताओ, या वो चीजें बहुत इस तरीके से, शुगर कोटिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल। वहां पर कोई ट्रैश टॉकर नहीं रिक्रूट करेंगे ना वो लोग, या कोई सच बोलने वाला सेंट। वहां पर वो रिक्रूट होगा जो फायर फाइटर है और बहुत बड़ी कैलेमिटी को भी वो रेक्टिफाई भी कर रहा है और प्लस डिक्टेट भी कर रहा है, तो उसको बहुत ही इजी वे में। I mean, where is the main role? Problem solving is the main job. You have to do it on the first very place. So आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो आपत्तिजनक हो। As I said, smile with empathy. Like smile मतलब एकदम ऐसा smile नहीं कि सामने वाला भी देख के कह रहा है कि यार is bloody faking it. ठीक है? Too much of grammar can trouble you. They can easily get bored. The wala part. Yes, Pooja, yes. I wanted a little more explanation on grammar. I think I'm gone. Hello, Pooja. Yeah, I think there's some network issue. हाँ, we'll wait for her. So उसका सवाल जो था, I mean, let her come. I'll address. Priyanka, Yash, your questions? Yes, sir. Sir, Shubham told me he's mostly, like the panel will mostly talk about my engineering background. Is there something I'll come I to your should? question. Yes, Pooja. Yeah, Yes, sir. Pooja. For a time being, I land up to my Delhi office and I call my VPs. ठीक है? और मैंने पूछा कि give me the minutes of the meeting। या minutes of the meeting का तो मतलब ही वही है कि ग्रामर को अवॉइड करते बताना। लेकिन मैंने पूछा कि पूजा एसआर का आईएसबी क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है? And they say Pooja Aishar is a very good girl. She has been graduated from this, and eventually she had an interest for ISB. But then we had slightest of the decline. We overlooked it once upon a time, and then we again fed certain details about her, and then eventually we wrote a SOP, and eventually the time ran out. Oh, okay. So Understood. मैं irritate हो जाऊंगा, मैं कहूंगा ये what is this जवाब? Understood. I mean, तुम्हारा पर्स छीन कर अगर IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कोई भाग जाए और तुम हाफते हुए दौड़ के पुलिस वाले के पास जाओगे, तो तुम क्या बोलोगे कि मैं जस्ट उबर से उतरी, उसके बाद मैं कॉफी पी, कॉफी पीने के बाद मैं तीसरे गेट 3 तक पहुंचे, उसके बाद एक आदमी भागता हुआ आया और मेरा पर्स। ये इररिलेवेंट है। Irrelevant है, हाँ जी। कि भाई मेरा पर्स हो गया गेट नंबर 3 के सामने, पकड़ो। दिस इज द कीवर्ड। तो एक टाइम पर हम ये प्री अंडरस्टूड करके चल रहे हैं कि आपकी इंग्लिश हिंदी इतनी अच्छी होगी कि आप कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि आप 140 करोड़ के सबसे बड़े देश में, जो कि यंगस्टर्स का देश है, उसके टॉप 20 स्कूल्स में आ रहे हैं। तो वी आर नॉट हियर टू चेक योर इंग्लिश और हिंदी।
But we are here to check the diplomacy level, the manuratic level, the manipulation level in a positive side, and plus how you decorate in a way that it is sugar coated, but it is not like कई बार 5 stars में हम कुछ मीठा खाते तो मीठा तो होता है लेकिन वो बहुत ही सटल मीठा होता है, तो हमें भारीपन नहीं लगता। और यहाँ पर हम रोड पे कोई जलेबी खा लेते तो 2 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि ओ गॉड क्या हो गया। तो बस ये बैलेंस है ना, आपको ये मेंटेन रखना है। Okay, आप बड़े बड़े 770 वाले प्रोफाइल्स को भी बीट कर दोगे। okay, sir. सो हियर आई सी, हाँ या मृगांका, योर क्वेश्चंस। अभी आधे घंटे आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पूछना है गाइस। हाँ हाँ मृगांका। Yes, Shubham was saying the panel will mostly talk about my engineering background. Are there any questions I should keep in mind, like major, my minor देखो major project or something? देखो, जब जब आप अपनी इंजीनियरिंग को ये कहोगे, आई हैव, मतलब 2-3 बार कीवर्ड आ गया इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, इसका मतलब यू आर अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स दैट वर्ड। ठीक है। I have a recording of my I am Kolkata, but I cannot reveal, मतलब I cannot showcase you because अगर कभी आप ऑफिस आते तो मैं दिखा सकता था। ठीक है। देखिए एक इसमें साइकोलॉजी है। अगर तुम्हारी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी नहीं गई and you don't want them to talk, you better be prepared that yes, this was an awakening call for me, and it was totally because of the paramparagat ravaiya and parampara of my family and my ancestral and aspas ka samaj that I did engineering. But today here I am presenting myself on my reclamation, on my verdict that yes, this is certainly a doable element of mine. ये किसी फादर का अप्रोच नहीं है, ये किसी ग्रैंडफादर, किसी एंसेस्ट्रल का वो नहीं है। और इंजीनियरिंग इसीलिए मेरे कप ऑफ टी नहीं थी। आई एम एन इंजीनियर नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट देन आई एम हियर टू टेक माय चॉइसेस एंड वर्क अपॉन माय चॉइसेस। बट दो, अब इसको भी कंपनसेट, अभी इसमें तुमने अपने आप को खुद नेगेटिव कर लिया, बट दो engineering के subjects I might not be very profound with it, but then it taught me the resilience, the patience, the endurance, what professors, how I mean, who all are professors and what is the exact role of profs, what is the conduct, what is hostel life, what is what are breakups with family and friends and certain relationships I have been through. I've seen the miseries of an adulthood and I've seen accomplishment as well, and I'm delighted to tell that I have seen the gap between padhai and kamai as well, because now when I look down, when I look behind, I don't see that the topper is earning the highest package. So I have my questions against the timeline, that is the grades are the, I mean, ये paper grades होते हैं, paper board type, because they eventually do not matter at some extent of point of time. If you do not comfortable with what you have done in undergrad, I mean, यश, No, sir, I'm mostly comfortable. That it's not मैं that. यश का एक एग्जांपल लूंगा। यश एसओएल से है, तो एसओएल में 99% जो लोग जाएंगे उनकी दाल नहीं गलती है, इसलिए एसओएल में जाते हैं, लेकिन ही इज फ्रॉम द 10% ऑफ द साइड। अब इसको 10% को 1% ये कैसे बना सकता है? He can directly say that, sir, I had a family crisis at that point of time, and I thought that if it is all meeting up strangers and bringing the new rational thought and narrations into the seamless flow, I better meet my clients. The point, I have to meet my batchmates, I better meet my clients. And sir, sorry to say, but don't take it me wrong, but sir, बैचमेट्स ने बहुत कुछ सीखना था और शायद मैं वो मिस कर गया, लेकिन पैरेलल टाइमलाइन में मैंने क्लाइंट से बहुत कुछ सीख लिया। मैंने क्लाइंट्स ने ये भी सीखा कि एक चुप 100 पे भारी होता है। आई मीन अ कोट फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैंने क्लाइंट से ये भी सीखा कि देयर आर टाइम्स व्हेन वो इंसान 10:45 पे कुछ और था, लेकिन जब उसने 10 मिनट चिल्लाया तो 10:55 पे कुछ और हो गया।
एंड 11 बजे उसने मेरे साथ डील भी कर लिया. So patience is something I want to vouch upon, sir. And those are the traits I will definitely inculcate in my kids as well, sir. So these are the impression. I mean, like when you talk about kids at this age, fuck it. Kids का भी तुम्हें कोई लेना देना नहीं. लेकिन जब तुम इस एज पे कर रहे हो ना, तो सामने वाला बंदा जो है ना, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, वो तो इस वर्ड से बहुत फैमिलियर है, किड्स. तो you are speaking to not here, now here with him. So that are certain elements, kids. Then sir, definitely I want to bring, I mean, I read a very strong quote. मैं तुम लोग को अपनी बात बता रहा हूँ. I mean, like मेरे हाथ में पसीने आ रहे थे जब IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू हो रहा था. और उसके बाद मतलब पता नहीं क्या हुआ, और मेरे को बार बार मतलब वही होता है, नंबर 1 सूसू बहुत ज्यादा आने लगता है टेंशन में, बिकॉज इट वाज IIM अहमदाबाद एंड इट वाज समथिंग, ठीक है. बिकॉज आई वाज नॉट फ्राइटेंड कि कंपटीशन होगा क्या होगा. आई वाज फ्राइटेंड कि एक कॉलेज के लिए 140 करोड़ फाइट कर देता है, तो इसलिए. बट मैंने एक चीज बहुत सही कर दी थी, इंटरव्यू होने के पहले मैंने एल्यूमनाइज चेक कर लिए थे. और अब मेरी जो बातें थी वो मैं ये बोलता था कि रघुराम राजन ने बोला, चेतन भगत ने बोला, उसके बाद इन्होंने बोला, उन्होंने बोला. एंड इवेंचुअली द अटेंशन वाज मोर. कभी कभार तुम बात सही कह रहे हो या गलत, उसको वैलिडेट करने का सबसे सही तरीका जानते हो क्या है? किसी बड़े आदमी से बोल दो कि उन्होंने ये कहा था, कह तुम रहे हो, लेकिन तो दुनिया मान लेगी. इससे ये पता चल जाता है कि दुनिया बेवकूफ है, और ये पता चलेगा कि तुम हर बार गलत नहीं हो, जो कि दुनिया बना देती. So this is what I teach to all my students, कि you have to bring a philosophy and an element of surprise to them when you talk things which are absolute extremes. Like you start talking about work-life balance, you start talking about that, you speak about financial freedom. ठीक है, at that some point of time if I have a luxury car like a Merc and a BMW, ठीक है, मेरा एक घर है, वहां मैं रह रहा हूँ, एक घर और बना लूंगा ऑन सेफर साइड. भाई 1-2 बच्चे होंगे तो उस हिसाब से एक घर और बना लूंगा, और 1-2 छोटी छोटी चीजें करके उसके बाद आई विल बी मोर टुवर्ड्स माय अचीविंग माय फाइनेंशियल फ्रीडम. तुम 1 करोड़ रुपए महीने का कमाते हो, सॉरी साल का मान लो, ठीक है, और कोई 10 साल में 1 करोड़ कमाता है, तुम्हारा IT वाला कोई इंसान, ठीक है. अभी भी तुम उतना ही स्पेस लोगे जितने में सो रहे हो, अभी भी तुम उतना ही खाना खाओगे 1 महीने में जितने में तुम कंज्यूम कर रहे हो, वॉशरूम भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करोगे. योर वेटेज टू दिस प्लैनेट वुड बी द सेम, टोटली सेम. सो द अतिरिक्त एनर्जी जो हमारा होता है, उसमें हम जो पैसे की जो फाइट बहुत बढ़ा देते, एक्सट्रीम हो जाती है, उसको अगर तुम अपने इंटरव्यू में नलिफाइड दिखाओगे कि आई एम नॉट फॉर, आई मीन तुमको ये दिखाना है कि देखिए सर, एकदम लेमन में एकदम रॉ बता रहा हूँ, देखिए सर, ये MBA डिसाइड नहीं करने वाला कि मेरी दाल गलेगी या नहीं गलेगी, मेरी दाल ऑलरेडी गल चुकी है. इट इज द एक्स्ट्रा वेटेज एंड द एक्स्ट्रा एनर्जी, जो कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत शुरू से परेशान है कि यार ये रुकता नहीं है, 10-11 बजे तक 12 बजे तक काम करता रहता है. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट इन टू ए कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड डेफिनेटली वॉन्ट टू डू सर्टनली समथिंग, because I have justified my genre. मेरा तो हो चुका अब. This MBA is for people. This MBA is for masses. And here I am not contradicting my ambitious nature. Ambitious होना इस जरूरी नहीं कि सिर्फ आप अपने पैकेज के लिए होंगे. There are some big returns जब आप कोई चीज इवेंचुअली फॉर्म कर देते हैं उसके बाद. Okay. So now, Yash, तुम्हारा कोई सवाल? मृगांका या पूजा is coming back to you. Yes, questions? Yes. Yes, sir. Sir, Yes, please go ahead. okay. Yeah, Yash, go ahead. Actually, you just said one word, diplomacy. So I want to know much about this word. So what exactly do you mean about diplomacy? Imagine you have 2 kids, ठीक है, और एक स्मार्ट है पर वो बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं है, ठीक है, और तुमको ये बात पता है कि यार ये इसकी दुनिया में ये कर लेगा, मैंने ये स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है. उसको देखो, सर्टेन ट्रेट्स जो होते हैं ना वो बचपन से डेवलप हो जाते हैं. और एक जो है वो बहुत पढ़ता है,
Just a moment, guys. I have a mail to check. Hold on. Sorry, guys. Yeah. हाँ. Yeah. So वो बहुत पढ़ता है, ठीक है? Now, if they are fighting with each other, ठीक है? You know the limits, ठीक है? कि somebody is academically good and somebody will definitely do something good in their life. What is the conversation you're going to create with your kids? That is the word diplomacy. प्रगति और प्रतिस्पर्धा. What is the meaning, English meaning of pragati? Progress. Pragati, growth. Somebody said something else. I meant progress. Progress, ठीक है. And प्रतिस्पर्धा. प्रतिस्पर्धा. Competition. कंपटीशन, ठीक है. कंपटीशन में हमेशा कोई पीछे छूटेगा और कोई आगे रहेगा, हमेशा. प्रगति में सब लाइन क्रॉस कर जाते हैं. तो सिर्फ प्रगति के बारे में सोचो, अपने आप डिप्लोमेसी निकलेगी. जैसे मेरे लिए तुम मेरे 3 बच्चों की तरह हो, सब बराबर नहीं है, लेकिन मैं सबको थ्रू करा दूंगा, क्योंकि सक्सेस का रास्ता कोई एक है ही नहीं. इसको ऐसे समझ लो कि मैं एक फ्लाइट में हूं और मैं तुम्हारा पायलट हूं और मैं तुम तीनों को पैराशूट से एयर ड्रॉप करा दूं और मैं तुमको ये बोलूं कि सालों 5 बजे मेरे को टावर पे मिलना, तो तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अलग अलग. बस यही है. डिप्लोमेसी इज विदाउट हैम्परिंग और विदाउट डैमेजिंग somebody's ego, ठीक है? नंबर 1 एंड नंबर 2, विदाउट डैमेजिंग somebody's identity. वो somebody आदमी नहीं है, वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई घर भी हो सकता है. It can be any form of being, non-living, living, कुछ भी. Your words should praise in प्रगति, not in प्रतिस्पर्धा. तुम किसी चीज को किसी से गिरा के मत कंपेयर करो, rather than एक ऐसी भाषा का चयन करो जो तुम्हारा पर्पस सॉल्व करते. So I hope you get my notion, Yash. Yes, sir, I do. तुमसे अगर कोई तुम्हारा बैचमेट पूछ ले कि फैमिली बिजनेस ये वो ऐसा वैसा, क्या करते हो फैमिली बिजनेस? यार पापा का बिजनेस कर रहे होगे ये वो ऐसा वैसा. आई एम इन एक्सेंचर, आई एम केपजेमिनी, आई एम केपीएमजी. तो तुम्हारे जवाब में आईटी सर्विसेज या उसके डोमेन को बिना गिराए हुए तुम अपने आप को अगर वो बता पाए, तो वो होता है डिप्लोमेसी. Okay. सामने वाले को Eventually- बिना इफेक्ट करे अपने हाँ, आप को आगे बढ़ाना. हाँ, इवेंचुअली हम जब रिटेलिएट करने का हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो ये होता है कि अच्छा तूने आईटी के मेरे बारे में बोला, अब मैं तेरे को आईटी को मैं गिराऊंगा पहले हाँ, और इतना गिरा दूंगा कि फिर मेरे को. हाँ, तो ये चीज गिरा हमें के अवॉइड जंप करना, गिरा के जंप करना, उसके साथ रहते हुए जंप ना करना. Yes, yes. Pooja, you had certain questions. Yes. Yes, sir. Sir, shall I go all of them at once or one by one? One by one. Will everybody get a chance after one question of mine, or shall I go with 4-5 questions in one go only? नहीं, एक एक क्वेश्चन करके will हम खत्म कर लेंगे उसको. हाँ, yes. Sir, I am not from the operations domain. I was following up on different SPJMR questions in which they are asking my day-to-day work, which is okay because that I'm doing, I know. But for operations, if they ask me stuff such as Six Sigma or Lean, I have seen the application of them in Amazon, but I've not. I don't know them in theory. I've read up on them thoda, but not in depth. Okay. जैसे कोई Amazon बोलता है ना, the word assembly line, the word supply chain, the word operations एकदम उसके दिमाग में वाइब्रेंट हो जाते हैं, जो भी इवेंचुअली जो भी उस सेक्टर से है. जैसे जंबो टेल हो गया, Amazon हो गया. I mean, these are the companies. So to answer your question in a better way, इस चीज को इस तरीके से समझो कि अगर तुम इन सब चीजों का जवाब नहीं दे पाए तो इट्स अ बिग लॉस टू द एंटायर
टाइमलाइन जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इन सब चीजों से वो करिए, लेकिन आप उनको ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल बता दीजिए कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग सर, माय इलेक्टिव्स विल बी बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोफेसर्स, मैं प्रोफेसर से बहुत बात करूंगी, एंड आई टोटली take this accountability that I firmly believe, guys please maintain, yes, हाँ, मैं इस पूरी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करती हूँ और मैं जानती हूँ कि जितना भी इलेक्टिव्स एसपीजेएमआर ला रहा है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है, and which is definitely be determinant and being very loud when it comes to placements. तो I will not come with a pre mindset, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तीनों सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आई विल नॉट कम विद प्री माइंडसेट, मैं कोई प्री माइंडसेट से नहीं आने वाला हूं या आने वाली हूं, आई एम ओपन टू द डिस्कशन विद द प्रोफेसर्स, इवन आई एम ट्राइंग, आई विल बी डेफिनेटली want to contest for placecom elections if I would be getting a chance. I will not be limitizing myself on the clubs, मैं कंसल्टिंग का, ऑपरेशन का और क्लबों का भी पार्ट रहूंगा, be it a normal weekend wala table tennis ka game as well. But then yes, when it comes to Amazon, sir, these were my specific at length I can discuss, these were my specifics, these were my fences, and sir I'm really sorry agar koi jawab nahi aata, I'm really sorry, I mean I want to just sir abhi ye main recall nahi kar pa raha, in a very humble way and without damaging, because they should eye to eye posture contact, well groomed, और उसमें एम्पैथी दिखनी है, यस मतलब वो दिखनी चाहिए। Okay. एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिस भी कॉलेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो 10 मिनट पहले भी ये ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर सकते हो, उसके प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके प्रोफेसर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, यू स्टार्ट विद डीन एंड वीसी एंड चांसलर्स, और वो पढ़ने के बाद उनकी कुछ लाइनें कोट भी करो, सर आई एम नॉट ओनली लिमिटेड टू इलेक्टिव सर, I beg your pardon sir, I am not only limited to elective sir, I often read Mr. D'Souza sir, and the kind of impression he puts via Twitter and on his blog sir, that is something very engaging and encouraging sir. Definitely his economical papers for the last financial year, which was also been taken by RBI, is again amazing sir. And abhi usko kya hoga na, like that professor will back go into the guru chela ka parampara kind of stuff, and then he said that yes, might be we will have so many of students, but he or she can be my Arjun and I can be his or her Dronacharya. I mean, let's not talk about 2021, let's talk about where he is coming from. He is coming from bloody 70s. Might be your friends series cannot help you correlate, but if you talk about Chandrakanta and Alif Lal and Shakti Khan, he can bang on. So the psyche needs to be maintained and needs to be fragmented. As I said, these alumni, these famous laurels of those college ने क्या किया, कॉलेज बना, क्यों बना, क्या परेशानियां हुई थी, कौन कौन से alumni हैं, क्या हो सकता है, हर एक चीज की कैटेगरी, जैसे आप दोनों महिलाएं हैं तो आपकी कैटेगरी बन गई, ये ना चाहते हुए भी यश ने अपनी कैटेगरी बना ली फैमिली बिजनेस, ये टिपिकली उन क्राउड से compete ही नहीं करेगा जो दे आर कमिंग फ्रॉम आईटी, एक्सेंचर, ये वो ऐसा वैसा। अब तुम प्री माइंड सेट अपनी कैटेगरीज और सॉर्ट करो, उनको यहां तक ले आओ कि ओ गॉड, आई मीन he has this, that is the USP. What is my USP? I'm a chairman of an international firm as well, and then I am a politician as well. Let's bring this tone aside, and what I will be competing upon is like the IT people. मैंने अपने शुरुआत के 2 साल I served Accenture strategies. Yes, I've tasted that medicine as well. So your USP, I mean, मैंने 1000 पेड़ पौधे लगाए, मैंने 10,000 बच्चों के माल न्यूट्रिशन के लिए काम किया है, मेरे इतने प्रोडक्ट मैंने किए हैं और इतने प्रोडक्ट रीच हुए। तुम एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट कर दोगे, उसमें रीच दिखेगा पता नहीं कितना,
कुछ बड़ा करो, रीच देखो इतने लोगों को भी रीच पहुंचे. It's the art of presentation. So yes, I hope I answered the question. If you do not satisfy with, मतलब कोई और counter question है तो पूछना है पूजा. Yeah. So another question, Pooja. So not as a follower, but it's a different question altogether. Yes. So the second is, can I write down points? So sometimes they ask us a question where we have to assimilate our thoughts. So can I say, sir, just give me some time to collect my thoughts and I can write it in the notebook? What is it like? If they ask us 3 points, I I'm mean, writing. थोड़ा मजबूत क्वेश्चन हुआ तो otherwise नहीं होगा. Otherwise it could be an element of otherwise as well, because it has to be very natural. It has to be very prompt. ठीक है. I mean, look at me. When I'm speaking raw. But if you give me a teleprompter like Modi ji uses all together all time, ठीक है, तो मैं कुछ और तरीके से बोलूंगा. ठीक है. तो definitely, and I think the rawness is more. It gets more connect. Okay. The connectivity is more. Okay. बिकॉज आप मतलब जिस भाषा में आपको आपके मन आपको समझाया, उसी भाषा में आप तुरंत समझा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पूरा समझ में आया है. Okay. अगर आप अपने साथ फेक नहीं कर रहे हैं कि आपको, जैसे कई लोग होते हैं ना, वो अपने साथ ही खुद फेक कर रहे होते हैं, मतलब खुद समझ में नहीं आया लेकिन दूसरों को ज्ञान देने लगेंगे. तो इफ यू आर करेक्ट ऑन दिस पार्ट ऑफ रैशनल थॉट प्रोसेस, ठीक है, यू कैन गो अहेड. या मृगांका, योर क्वेश्चन. Yes, I read old questions of SPJMR interview, and one of the question was that what will you do if you do not get selected? What is your backup plan? हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? No, sir. अच्छा. मैंने पुराने questions पढ़े थे, तो do I talk about my offer letters that I have in hand? No, right? Like they're talking like, what is your backup plan? So I do not have to directly देखो, say that, sir, I do have an Accenture offer letter in hand. I do not have to tell them that, right? देखो, आई मीन एज आई सेड, हर क्वेश्चन के बहुत सही जवाब हो सकते हैं. मैं ये मान के चलता हूं कि आज जो मेरा सही जवाब है वो अगले हफ्ते बदल जाएगा. ठीक है. मैं रेदर देन मेरे शब्द से ज्यादा मेरे इंटेंशन को समझना. इस जवाब में एक गड्ढा है जिसमें आप फंस के गिर सकते हैं. और वो गड्ढा क्या है कि इसको अगर आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जवाब दिया तो उसको लगेगा ये बूस्ट कर रहा है, ये ही इज बूस्टिंग और शी इज बूस्टिंग. ठीक है. और अगर आपने ये बोला कि मैं तो आप ही के भरोसे हूं, तो भाई दुनिया में कोई भी किसी के भरोसे रहा है. अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के भी भरोसे हैं भी और अगर आप बता रहे हैं तो वो भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा. क्या लाइफ पार्टनर, फादर एंड सन, कुछ भी हो सकता है. तो ये अब आपको ना बाइक, आई मीन पता नहीं आप लोगों ने बाइक चलाई, कभी कभार क्या होता है ना, हमें लेफ्ट और राइट दो कट मारने होते हैं. कभी बैरिकेटिंग आई है ना, तो बैरिकेटिंग में तुमने देखा होगा पहले काटोगे राइट और फिर तुरंत तुम्हें राइट लेफ्ट काटना है और फिर राइट काट के निकलना है. सो दिस क्वेश्चन इज अ जिगजैग क्वेश्चन. राइट. इसको बहुत ही शांति से हाथ जोड़ के इसको तुम्हें जवाब देना है. हाथ जोड़ के मतलब लिटरली हाथ जोड़ के नहीं, मतलब एकदम विजिलेंट होकर. इसका जवाब सिंपल ही रहना चाहिए, सर लाइफ गोज ऑन. डेफिनेटली सर, मैं हारूंगा नहीं. आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स सर, एंड डेफिनेटली ये लाइन याद रखना, अगर अर्जुन बन के सीख नहीं पाया तो एकलव्य बन के सीखूंगा, लेकिन सीखूंगा जरूर. राइट डाउन. दिस कैन क्रिएट, आई मीन बाप रे, उसके अंदर इमोशंस का एक बॉम्ब ग्रेनेड फट जाएगा. So we can बाय लैंग्वेज हो सकता है हिंदी इंग्लिश का. हाँ, इंटरव्यू में उनसे बोल सकते हैं ना, sir, there is a quote from where I want to start to answer this. That's in Hindi, sir. If you allow me for a moment, sir. Yes, and start it. Yes, sir, I will just definitely say that the priority is definitely given to the current B schools. I have applied to some of the few B schools, but you are on the very top chart, and I am not, sir. I'm not. I'm definitely appreciating my opportunity, and today I'm here sitting. And sir, I want to refer a quote, sir. कि अगर अर्जुन बन के नहीं सीख पाया तो एकलव्य बन के सीखूंगा, लेकिन सीखूंगा जरूर. And this will, trust me guys, this will create a different kind of shift, a next level shift. Okay, sir. Then there are alternative, I mean, if you want to extend this, Right. if you want to extend this further, sir, definitely, I mean, I had certain offer letters with me, but then sir,
at some point of time I will, बहुत humbly देखो मेरे facial expression देखना sir, at some point of time I will definitely face stagnancy sir. So sir, problems तो आनी है उसको मैं अपने इसी एज में एड्रेस करने चाह रहा हूँ सर, because nobody is mortal sir, मतलब कोई अमर नहीं है सर, nobody is immortal sir, ठीक है. So I mean for me problems are like, वो आ सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उनको दोबारा दूसरे रास्ते से भेजना हमारे हाथ में है. तो सर I don't want to accumulate all my problems. I have a parameter, like 2 प्रॉब्लम आएंगे तो 3 प्रॉब्लम जाएंगे, 2 प्रॉब्लम जिंदगी में आएंगे तो 3 प्रॉब्लम जाएंगे सर. एंड इन दिस नरेशन सर, हर हफ्ते मेरे प्रॉब्लम्स बदल जाते हैं. डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन लिस्ट बदल जाती है. यस. सो या यस, योर क्वेश्चन गाइस. आपको मेरे रिप्लाईज पसंद आ रहे हैं ना, मतलब मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. No, sir, they're very नहीं nice. आ रहे हैं सर. Helping. I mean, these are not the replies जो कि आपको कोई कंसल्टेंट या कुछ ऐसे दे सकता है. As a student I am giving, जो हम लोग अपने डे टू डे में फेस करते हैं. यस, हाँ एकदम ये वो करेंगे. हाँ, सो यश तुम्हारे सर क्वेश्चन. मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो फैमिली बिजनेस वाला पॉइंट है, इसको मैं और कैसे अच्छे वे में, स्ट्रॉन्ग में पोर्ट्रे कर सकता हूँ. मतलब वे, आई वांट यू टू टेल मी द वे. अब मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको 3 बता सकता हूँ फैमिली बिजनेस क्या स्ट्रेंथ है. एक तो सेल्स, एक मार्केटिंग और एक ई कॉमर्स. मतलब थोड़ी ये स्ट्रेंथ है मेरी. तो इसमें मैं कैसे आगे हाईलाइट कर सकता हूँ उसको? देखो वो तुमसे इस वाले डिस्कशन में इतना इंडल्ज नहीं होंगे कि मतलब तुम्हारे बहुत डीप डाउन में जाए सेल्स मार्केटिंग ई कॉमर्स में, लेकिन तुम बता सकते हो उनको. भाई लोग बेचना या लोग मैनेजमेंट का जो रियल एसेंस है वो करने के लिए आते हैं. स्टार्टअप वाले तो नहीं आते हैं. और ये भी दिमाग में हटा देना कि जो बहुत जबरदस्त लोग हैं वही बी स्कूल से पढ़ने आते हैं. वो नहीं, जिस टाइम आप आ रहे होते हैं उस टाइम बी स्कूल से रिक्रूट करने आ रहे होंगे. मतलब आई मीन ये जो अग्रवाल है, ओला के मालिक हो गया, चाहे इसके मालिक ओयो के, तो ये दोनों आई मीन लुक एट देयर एजेस, ठीक है. सो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि यू ब्रिंग अ नोशन टू देम दैट स्लाइट मैनेजमेंट अगर मैं सीख गया थोड़ा सा, जैसे ये वाला भी तुम्हारा एक मैनेजमेंट सेशन ही चल रहा है, तुमको बहुत सारे हैक्स पता चल रहे हैं जो इस इंटरव्यू तक नहीं पूरे लाइफ लॉन्ग रहेंगे. तो उनको बस ये कि सर आई वांट टू कम नॉट इन द क्वेस्ट ऑफ ग्रेड्स एंड जॉब्स, आई वांट टू कम हियर जस्ट टू मेक श्योर दैट माई फायर फाइटिंग, जो सुबह से लेकर शाम तक मैं अभी एक फायर फाइटिंग कर रहा हूँ, अरे ये हो गया तो ये करना है, अरे गोडाउन में ये हो गया, अरे ये हो गया, ये सब ना करके मैं ट्रस्ट, डिप्लॉयमेंट, आई मीन डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, डायलेक्ट, इसको इतना स्ट्रांग कर लो या आई जनरेट माई ओन वर्क फोर्स. And sir, as Steve Jobs always said, and eventually he died by saying this, never settle. I don't want to come here for a settlement. I want to come here to involve. ये भी लिखो सब लोग. I want to come here to involve, to evolve, because you cannot evolve without involve. Involve, then evolve. And those 690 वाले लोग, you must have a very, you have a very strong chance. And after this session, you will definitely, I mean, 70 to 80% chances आपके strong होने वाले हैं. Okay. So Yash, cut the long story short. You make them feel that this is very serious. Do not say I am open to jobs as well. I want to continue with this. This is the family legacy, because the technology has taken a very deep down shift. ग्रैंडफादर से फादर तक टेक्नोलॉजी नहीं था. भाषा बदली होगी, मेरे फादर की सेलिंग प्रपोजिशन बदले होंगे, कुछ कमोडिटीज और बढ़ गई होंगी, बट फादर के मेरे आने तक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई. आई कैन नॉट टेल माई फादर एंड डिक्टेट go to Google AdWord, go to monetization of YouTube channel, go to this, go to that. That is something I have to learn, sir. So I have to learn a general management, sir. It will be an honor to be a part of your cohort. Yeah. Isar, question.
Sir, what are the main points that we should highlight in the manifesto so that they're concise also, but they hit bullseye? मैनिफेस्टो being a politician में मैनिफेस्टो इसलिए लिया because in our world manifesto is very important. मैनिफेस्टो इज हम वो बातें बोल रहे होते हैं जिससे हम जनता को लुभा रहे होते हैं. लाइक आई विल ब्रिंग दिस, आई विल ब्रिंग दिस, आई विल ब्रिंग दिस, आई विल ब्रिंग दिस. ठीक है. सो मैनिफेस्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सब लोग लिख लो. कॉलेज भी चाहता होगा कि कुछ कुछ हो, तो तुम इंटरनेट पे जाकर बोलो कि वो कॉलेज कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर, और जीता तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीतते तो आए अहमदाबादी वाले हर जगह. तो तुम अपने कॉलेज के लिए वो बताओ कि तुम वो जिता पाओ. ठीक है, कि मैंने लास्ट ईयर ये देखा सर, एंड आई थिंक दैट वी कैन टुगेदर वी कैन विन दिस क्वेस्ट फेस्ट अनरेस्ट कुछ भी. ठीक है, वो जो भी होगा एक साल में, जो जो कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो भी किया. ठीक है. आई मीन you speak about that. I mean, the last year, SPJM took part in this Bangalore Technology Fest, and I think so. I mean that. I mean, I definitely have a zeal to participate. Not demeaning them. The last year, आप लोग तो कुछ जीत ही नहीं पाए. You got a compensation prize. नहीं. I mean, you just dig down your thoughts and collectively आप बोलिए उनको कि sir, I mean, this is the fest. I have a very strong craze. Last year, you also went to IIT Delhi, sir. I mean, the South Delhi, and the fest was too loud and too good, sir. And yes, I was one of the attendees, sir. It took me quite a exchange of LinkedIn messages and mail trails to get the passes, but definitely, sir, that is something I want to precedent it, sir. I want to share it, sir. And I mean, अब अगर यश ये लाइन बोल दे तो आग लग जाए इंटर में कि आई एम हियर, आई एम कमिंग हियर इन द मोस्ट एम्पैथिकल वे, आई एम कमिंग हियर टू फाइंड and make an end to my exploration of my co-founders, my VPs. अब उनको बोलेगा, हे भगवान, ये बंदा ना तो नौकरी लेगा, और ये ढूंढने अपने को-फाउंडर आ रहा है, मतलब और नौकरी हमें नहीं देनी पड़ेगी, यही दे देगा 2-3. Look what strong the punch is. Why you're doing MBA? I'm looking for my co-founders. Now, even when he said this in his introductory meet, all the people in, I mean, BIMTech or IMT go crazy. Okay, यार, this is the guy. I mean, हम लोग के साथ उनको gelled up करना है, मिलना, इसके साथ तो बना के रखनी है. He is somebody good with money. Definitely, he has a pattern of business. इसकी IPO करवाते हैं, इसको VC में जाते हैं, राउंड 1 में ले जाते हैं, राउंड 2 में ले जाते हैं, राउंड 3 में ले जाते हैं. अभी तो स्टार टैंक आ गया, शार्क टैंक जो भी. So yeah, next question, guys. Sir, इसमें there was one question that you were asking, if you cannot get into SPJIMR, if you can't tell anybody that you're into SPJIMR, and yet will you continue? मैं उससे ये चेक करना चाह रहा था कि तुम्हारा पर्पस ब्रांड है या लर्निंग है. लेकिन देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम लोगों का पर्पस ब्रांड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कुछ है नहीं. ठीक है. यश के पास ठीक है एक फैमिली का वो है, ठीक है, बट आपके पास अमेजोन है. Okay, but then the point I want to bring is you want to go again for a job. ठीक है. तो मैं बस वो चेक कर रहा था कि ब्रांड मैटर्स या लर्निंग मैटर्स, दोनों साइड सही है. अगर आप एक कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन सुंदर पिचाई आपको मतलब कुछ बोल दिया तो मतलब उसके सामने आप कुछ नहीं. तो ऐसा नहीं कि सीईओ एक एम्प्लॉय होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तो हम तो अपने ही मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी. लुक आई विल नेवर गो इनटू दैट डिस्कशन कि कोई चीज अच्छी कोई चीज बुरी, बिकॉज आई एम हियर नॉट मेंटेनिंग माय डिप्लोमेसी, बट देन यस आई ट्रूली नो दैट somebody who is in Amazon या PayPal या बड़ी कंपनीज, Microsoft, Google, they eventually can impact the same, because it is all together on the variable, and the variable is meeting new strangers. Okay. So इसमें मतलब I can very humbly say of my opportunity cost कि I want, because what am I losing by going to SPJIMR without a brand is something that I might gain while if I go to IIM Kozhikode, if they take me, yeah, if I sail through the interview. So ऐसे करके can we say answer this question? मेरे को फिर नहीं समझ में आया तुमने क्या बोला. अच्छा, अभी तक मैंने कुछ भी बोला हो, तुमको ऐसा लगा कि तुमको समझ में नहीं आया? नहीं. तो मेरे साथ ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं तुमसे इस बारे में और भी बात करूंगा अगेन. मेरे को, हाँ, अब तुम
तुम मेरे को ये समझ के बोलो कि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ. Okay. अब तुमको ये समझाना है, क्वेश्चन पूछ रही है. कि if you cannot tell anybody that you are that you've got admission into SPJMR, will you still continue and learn from this institute? Will you still study? हाँ. तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? Sir, well, being a student of commerce, I would have to make a very practical decision by looking at what I'm losing if I go into SPJMR without its brand name. If I can get the same recognition from a college such as I am Cozy Code, I would definitely go there, because learning is a continuous process. Something I might lose by not learning at SPJMR, I might learn somewhere later down in my life. But Definitely. For the time being, I think the brand will also help me. The brand name will also help me present myself better. Look, as I say, there are so many of multiple ways of answering this. You have done fairly justice with the question, so I don't want to change कि कुछ unchange करो, ठीक है? I'll refer to this quote. The quote is, when I was down with Corona, तो I felt like मैं काफी अकेला हूँ. Write this, काफी अकेला हूँ. And then I swapped the first two words. So it eventually became अकेला काफी हूँ. So by swapping certain words, the entire meaning and thrust and zeal and conviction and compassion become मतलब change हो जाता है पूरा. So अकेला काफी हूँ gives me strength. और काफी अकेला हूँ lowers down my morale. So I'll definitely go with the swap of words. So just I'll say that conviction and determination को किसी भी लाइन जो भी तुम कुछ भी बोल रहे हो उसको तुम वो कर सकते हो. बस याद रखना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए. तुमको डिटर्मिनेशन रखना है जो तुम कह रहे हो, और backed by some strongest of the emotions and feeling. Have you gone through an indulgence with a fight after 2 packs down? और फिर उसके बाद हम किसी के साथ जब बहस करते हैं, वो हमारा दोस्त होता ही होता है. So we do not have a script in place. ठीक है? And we fucking tell so much of it. So, it's all in our subconscious mind. At that point of time, we are backed by some great emotions, though they are on the negative side. If we learn how to bring that from the negative side to the positive side, we do not need a teleprompter or a script, just like our PM does. Okay. So next question, please. So I have a couple of more. We'll go one by one. So, Mriganka? No, sir, I'm done. Like, that's all I wanted to ask. Yes, you have any questions? No, sir, not right now. Yeah, sir. Pooja, tell me. Sir, there was once also where you asked a question about industry regulation and policies. अब जैसे I was going through some case studies to prepare for the interview only for Amazon, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो इन्वेंट्री मॉडल है उसमें 50% FDI कर दिया है, इसीलिए Amazon आगे नहीं चल पा रहा. उन्होंने कहा Amazon को रिटेल फ्यूचर का बहुत बड़ा पार्ट लेना पड़ेगा for them to sustain in India, whereas Flipkart is doing much better. So अब इनके जैसे keywords हो गए FDI and what is government ने कभी ये कितना डेप्थ में पता होना चाहिए, even if we are giving these answers. तुम उनको bypass भी कर सकते हो इस चीज में. When I was getting interviewed, some panelists said that you are a politician, you can be the next Kanhaiya Kumara for campus. We don't want another JNU. Then I humbly said that, sir, first of all, it is we have to be very reasonably correct about the way we are applying this mathematics. I come from organizational part of politics, not electoral. So me doing any dharna pradarshan or bhashan baji or is fairly the chance कि जितने chance कल सूरज उगने के हैं उतने ही चांस मेरे ये ना करने के. Because then वो आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं because you see politics as just like what Bollywood has taught you. I come from organizational side of politics rather than electoral. The people who contest comes from electoral, and the people who are policy makers in everything, like such people like Dr. Manmohan Singh, all those names which are policy makers, and then eventually they go not in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha.
They eventually not can become the prime minister, but can be the Rashtrapati, the president. So this is the entirely different domain. So yes, उनको आप bypass भी कर सकते हो अगर आपको reasonably ये चीज का quest हो सकता है. अब एक छोटा सा example, when we going to buy a phone and we clear about the specifications, we did our homework, like 8 GB has to be 8 GB, 8 GB, 8 GB, 8 GB RAM, इतना processor. Then still we go to YouTube and then we compare from 8 GB to 8 GB. So अगर तुम्हें ये inventory, FDI और ये सारी चीजें इतना interest है, तो either you Google it or either you arrange a conference call with me. I don't know about Amazon, but then this FDI, this narrow doctrine, this 1992 application, these investment coming to India, this globalization, I can tell you the way you have been taught A, B, C, D, E, F, G, H. And there will be a point of time जब आपके concepts इतने clear हैं, it's like breathing for you. अच्छा सर FDI वो आप मतलब चलते चलते भी उसको बता सकते हो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि yes, I am talking to somebody so called बुद्धिजीवी. So let's not dig into it, because a professor would be the first person to back out to a discussion which he will not be comfortable, because you are a student, you can just escape by saying the word sir मेरे को recall नहीं हो रहा, but he cannot, by the fortune, he cannot use this. Understood. Yes. So next question. Sir, there has been a question also doing rounds in SPJIMR ki imagine that you've already been selected. What is the one trade we should not select you for? You have to Okay, give so this is again a very zigzag, but छोटा वाला zigzag है, ठीक है. I mean, one trade, मतलब again, as I say, there is multiple patterns of answer. So immediately you're giving me a question, I am replying at a level I am. जैसे अगर मेरे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता, the one trait would be that yes, I will not be able to मैं कोई अपना काम, I cannot able to stop myself, neither my company, neither my quest of my ideology, because one serves my appetite, one serves my ideology. So I go with the combination equilibrium, and the steering is my knowledge, and just to imbibe that knowledge, I'm bringing myself in the physical component, in the physical form, to learn the human cognitive interface, to learn what the rational thinking is. So yes, just to answer the question, sir, I beg your pardon if I went too long, sir. I mean, there are so many thought processes which I will be definitely encountering. And in that process, I also come with a process key. What is my biggest hack or lack at this point of time? My biggest hack or lack is I'm being invested at multiple levels. I'm running a company, I'm a politician, and apart from that, I'm going for a learning, which for most of us is directly proportional to earning, but not for me. My learning is directly proportional to knowledge, sir. And in the quest of knowledge, I do not want to demean the upper two components, which I have been devoted prior to this commitment I'm going to have by the blessings of yours, sir, if I ever get selected. So that is somebody, if somebody can presume to assume that यार ये तो कहीं भी बहुत ज़्यादा जगह indulge है, ये नहीं कर पाएगा, sir, I've been doing it and been successfully doing it. And sometimes being a firefighter is the essence of the hour, because the more you do firefighting in the gradual years, that will help you in your upcoming years. Next question, Pooja. Sir, by geography, you had said कि geography आप बताओ कि we should know about geography. So is it geography in like general or geography of the school where like SPJIMR is in Bombay? So should we ज्योग्राफी तो इतना बड़ा अध्ययन का विषय है कि आप यूपीएससी भी क्वालिफाई करके पता नहीं आईएम ना मिले आईएएस बन जाती, तो इतनी आसान तो नहीं है कि आप 2 से 4 दिन या 15 दिन में कर लेंगे. लेकिन भारत के सर्वोत्तम पद राष्ट्रपति, या जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. 90% लोग दिल्ली बोलते हैं, ठीक है. या भारत का नेशनल स्पोर्ट, लोग हॉकी बोल देते हैं, हॉकी है नहीं, ठीक है. द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग इज कि you have to be very reasonable with everything you come across. ये है तो ये क्यों कर रहा है, ये देश है तो ये क्या है, क्या रीजन है, क्या इसका, सब चीज का एक बहुत डिफरेंट जॉनर है. उस जॉनर को आपको मीट करना है.
और ज्योग्राफी पे नो कमेंट्स बिकॉज दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू Okay. यू हैव टू हाँ जो नेशनल एलिमेंट्स है उसको आपको हार्नेस करना पड़ेगा यस Okay, sir. सर अब जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में मार्केटिंग लिखा था एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट्स बिकॉज आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आई कैन look into for marketing. Should in the interview in SPJMR, because they have selected me for operations, should I tell them marketing is something that I'm looking for, or should I just put it in the hobby and talk about it if they ask? you can be very vocal I mean if you have interest about marketing you can be very vocal but then marketing में आपके लिए neuroscience बहुत ज्यादा एज ए सब्जेक्ट निकल कर आएगा you google a professor Arvind Sahai from IIM Ahmedabad my future professor from IIM Ahmedabad Professor Arvind Sahai is one of the best neuroscience accommodation professor सो अगर उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आप मार्केटिंग को अरविंद सहाय से कम वो कर देंगे तो वो अपने दुनिया के सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल जानते होंगे द प्रोफेसर्स यू विल बी स्पीकिंग विथ सो यहाँ पर भी अगेन आप वाउच कर रहे हैं आप लोगों के नाम के सहारे एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट कर सकते हैं बट देन यू हैव टू बी बैक्ड बाय कंटेंट यस Okay, sir. So, does SPJMR give the flexibility of changing our majors? What they have mentioned on their site is that they do, but in practice, do they give this flexibility? No, the whole concept has been slightly changed. I mean, 2 years prior to this, now the subject has become elective. Elective is against certain credit points. So the number of electives you choose and the number of composition you create. So eventually your degree also can be transformed. So it is not a subject of now a single nomenclature. It is more towards, if we understand into the restaurant agency, it is not more towards an a la carte now. It is more towards a nation. So don't worry on those grounds as well. Okay. Okay. So I have those 2 years to transform from organization and the interview to marketing. You are open to everybody. You just be a part of the clubs, the PlaceCom, consulting club, operation club, supply chain management club, general MBA club, finance club, HR club. सब में participate करो, सबके president से मिलते रहो, बातचीत करते रहो, oblige करते रहो, and definitely you'll get what you want. Understood. So thank you so much, Pooja, Sar, Yash, and Mriganka. Thank you so much for being the part of the session. And if there is any other question left, I'm ready to answer. And thank you so much, Kunal Chawla and Ishu Yadav. I hope you have gone through certain questionnaires and there will be a next session for you as well in the near future. Might be today, might be tomorrow, but we'll be completing it very soon. And पूजा सर यश माइट बी प्रियंका मैं शायद आपको दोबारा भी बुला सकता हूँ कुछ मेजर एस्पेक्ट्स पे और बात करने के लिए बिकॉज हर बार वो आपसे पूछे ना पूछे लेकिन कुछ आप उनसे पूछने की जगह कुछ आप खुद से बता सकते हैं कि दीज आर द रिसर्च टॉपिक्स और वो बहुत ही वाइब्रेंट और नया सब्जेक्ट होगा दे विल इवेंचुअली बी योर कायल और वो एक अमेज्ड नोशन बनेगा थैंक यू सो मच गाइस होप दिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड कुछ बेनिफिट आपको मिला होगा One more question, sir. Yes. Sir, I wanted to know the SPJMR ka format for interview because they're calling us for me, especially on January 25th at 9:15 a.m. They have a WAT session with. हाँ, VAT होगा written analytical test उसमें कुछ नहीं होता है वो एक ऐसे की तरह आपके लिए होगा ठीक है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 9:30 का है तो आपको 12:30-1 बजे तक का आप फ्री हो पाओगे 3 घंटा चलेगा ओके सर और ये जो वैट होगा सर इसका कितना वेटेज है सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं बहुत आपका इंटरव्यू होगा आपका पूरा वेटेज इंटरव्यू है अगर आप इंटरव्यू में स्ट्रगल करने लगोगे तो आपका वैट का क्वेश्चन निकाल के वो चेक करने लगेंगे अच्छा वैट हाँ अगर आप इंटरव्यू में चेक करने लगोगे तो आपका देखो इंटरव्यू जब खराब होने लगेगा ना तो आपकी क्रेडेंशियल्स उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको बात तो करनी है ना दे हैव टू गिव यू बिकॉज यू हैव फीस पेमेंट आपने करी एप्लीकेशन प्रोसेस आपसे बात तो करेंगे वो तो वहां तक तुम लोग के बारे में वहां तक बात नहीं जाएगा वैट हार्डली टेक अराउंड 15-20%. Okay. I just want to fairly see that your writing skills and your writing capabilities. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining the session. Thank you. And I firmly believe that annual sessions mein Kunal and Ishu Yadav can also be benefited. Sorry, not you guys have आप लोग बहुत late join हुए थे, that is why the time is slightly ran out from my side. So, but still, I'll try to progressively do it by today. Thank you so much, everyone.
Thank you, Yash, Mriganka, and Isat. Thank you, sir. Thank you. Take Thank care. you, sir. Take care. All the best. All Thank the you. best. Happy Sunday, sir.